Sandal, can we start? Just give me a minute. Yeah. Yes, please, we can start. A very good evening to one and all present here. I would like to thank the IIT alumni for inviting us today, and thank you Yadav uncle for proposing our program. Again, a very good evening and welcome to all of you all. Before we start, I would like to introduce VFM and its singers. So VFM, Virtual Filmy Melodies, is a group of working professionals who are very passionate about music. They have had many programs in these trying times and lifted spirits. It was founded in May 2020. They present songs from the yesteryears to the latest ones on a virtual forum via Zoom and Facebook Live on the page at Virtual Filmy Melodies. The singers for today's evening are Jayashree Parashuram. She is a counseling psychologist and a special educator with decades of experience in the educational and counseling field. She is a consultant at various schools and also the founder of a counseling services center, Japa Insight Counseling Services. Next is Prakash Murthy. He is primarily a lawyer and has served in the Indian Air Force for over 23 years. Prakash is presently in the legal stream of the corporate world since 2009. He works with Cisco and also serves on the board of one of the Cisco group of companies. Krishna Kumar Menon. Krishna Kumar Menon is an engineer and MBA by qualification who works for a well-known organization as their business head in marketing. And Apurva Parashuram, that is myself. I am a lead certified architect and urban designer. I'm also a young entrepreneur, being the founder of AJP Design, an architecture and design firm, and the co-founder of Avid Design, an architectural construction firm since May 2020. Also, I would like to add a small disclaimer here. We are using karaoke tracks, and the tracks that will be presented today belong to their respective owners, and I or the VFM group do not claim any rights over it. It is only for non-commercial and entertainment purpose. They are freely available tracks on the internet. Also, all the facts and anecdotes are from Google Maharaj. So there may be some minor differences from what you know, and there could be much more as well. We are now in the virtual world that banks on the internet quality. We have done our best to bring to you a musical evening. If there are any glitches, please do excuse us. Feel free to post your comments and feedback in the chat window. So when we were asked about the theme, the first thought that came to our mind was R.D. Burman, S.D. Burman, and the more covered artists. But then, after a lot of deliberation, we thought we should cover the musical journey of Lakshmikant Pyarelal. They also have a huge list of hit numbers. Lakshmikant Pyarelal is the name that needs no introduction in the field of Hindi film music or Hindustani music. They are a household name in every part of India from the mid-60s till date. The name represents an archive of hit film music that was churned out non-stop right from 1963 till the end of the century. LP Lakshmikant Pyarelal ji were amongst the few Hindi film music directors of the good old yesteryears who were active right till the end. They composed music in over 600 Hindi movies from 63 to 98, out of which Lata Mangeshkar sang about 712 songs.
Asha Bhosle recorded almost 494 songs. Rafi Saab sang as much as 379 songs, and Kishore Kumar had sung about 402 songs. That's too many a number of songs for one music director duo. As we know, this duo made their debut in 1963 and were nominated for the Best Music at the Filmfare Awards almost every year. Many a times, they were nominated for 3 or 4 films for a particular year. With this, let's hear the first song of the evening from the movie Satyam Shivam Sundaram, for which LP won the Filmfare Best Music Director Award. Lata ji, who was in dispute regards royalties with Raj Kapoor, sang the song in anger in one take and left. And there was a controversy about the film, and a case was lodged against Raj Kapoor. But Justice Krishna Iyer squashed the prosecution at the threshold. So, Satyam Shivam Sundaram in the voice of Jayashree. Good evening, everybody. ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागा उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवध में, राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु, देखो इनको, दया करो प्रभु, देखो इनको, हर घर के आंगन में। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम।
सत्यं शिवं सुन्दरम् ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् Yes. So now Lakshmikant, who came from dire poverty, lost his father, and his father's friend advised him and his elder brother to learn music. Lakshmikant learned the mandolin and his elder brother learned the tabla. He began his film career as a child actor in Bakt Pundalik in 1949 and Aankhe in 1950. He also acted in some Gujarati movies. Pyarelal was the son of a renowned trumpeter, Pandit Ram Prasad Sharma, who was his guru. He was good at playing the violin and he learnt it from a Goan musician named Anthony Gonzalez. We don't know if this is true or not, but the song My Name is Anthony Gonzalez from the movie Amar Akbar Anthony is a tribute to his guru. His family fell into financial issues, so he played the violin in studios to earn money. Lakshmikant and Pyarelal met at the Music Academy for Children run by the Mangeshkar family. When Lataji came to know about their poor backgrounds, she recommended them to other music directors like Naushad, S.D. Burman, etc. So they worked as assistants to most of the music directors except O.P. Nair and Shankar Jaikishan. Thus started their journey in the musical industry in 1963 with their first movie Paras Mani, which had some hit songs in it like Hasta Hua Nurani Chehra, Wo Jab Yaad Aaye. So with this, let's hear another number by Lakshmikant Pyarelal, Mast Baharo Ka Main Aashik, from the movie Farz, which was released in 1967. Presenting this song is Prakash. Thank you, Purva. मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साह से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं। हो
सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साहे सके लूं, चाहे कली से प्यार करूं। हो सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने, हाँ मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने, हाँ किसको है जरूरत तेरी है ज़माने, हाँ मेरा अपना रास्ता दुनिया से क्या वास्ता, मेरे दिल में तमन्नाओं की दुनिया जमा है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साहे से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं। हो सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। मेरी आंखों से जरा आंखें तो मिला दे, हाँ मेरी आंखों से जरा आंखें तो मिला दे, हाँ मेरी राहें रोक ले नजरें तू बिछा दे, हाँ तेरे सर की है कसम मैं जो चला गया सनम, तो ये रुत भी चली जाएगी, ये तो यहाँ है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साहे से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं। हो सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। Thank you. This movie had some hit songs like the favorite Happy Birthday song Baar Baar Din Ye Aaye and Hum To Tere Aashik Hai Sadiyon Purani, amongst others. They kept churning beautiful songs like Mere Mehboob Kayamat Hogi from Mr. X in Bombay, Jhoot Se Jhoot Jaga Ke Chalo from Sant Jnaneshwar, and the songs from the very famous movie Dosti, for which they won the Filmfare Award. Let's hear the song from the movie Loafer, which had the dashing Dharmender and Mumtaz as the lead pair. O Aaj Mausam, presented to you by Krishna Kumar. Yeah, thank you, Apurva. Good evening, everyone. So I attempt this song, which was sung by Muhammad Rafi.
मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम, ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। क्या हुआ है हुआ कुछ नहीं है, क्या हुआ है हुआ कुछ नहीं है, बात क्या है पता कुछ नहीं है, मुझसे कोई हटा हो गए इसमें मेरी हटा कुछ नहीं है, खूबसूरत है तो रुत जवानी है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। काले काले भड़का डर रही है, काले काले भड़का डर रही है, ठंडिया है हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमान हो रहे हैं, हर कली हम शक कर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। हुस्न वाले ऐ मेरे यार हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हमारे, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरे, जीने दे चाहे तो मर डाले, तेरे हाथ
आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। तो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आज मौसम, आज मौसम। Thank you. LP had an excellent sense of what would work at the common man's level and in cinema halls more than in internet forums. They had a vast command over folk and Hindustani tunes. LP were the composers who excelled consistently for more than 3 decades in all forms of film music, such as classical, folk, qawwali, mujra, western, lori, bhajan, ghazal, and you name it. They were also outstanding at exploiting several instruments, including their favorite dholak, tabla, and also the violin, guitar, bongo, piano, santoor, sitar, mandolin, and many more Indian as well as Western instruments. Their music is of the common people, for the common people, and inspired by the common people. It was a perfect music for any successful film to have. With this, let's now hear another number by LP from the 1971 movie Mehboob Ki Mehendi, Jaane Kyun Log Mohabbat, presented by Jayashree. This film was released among the 17 consecutive hit films of Rajesh Khanna between 1969 and 71. Over to you. इस ज़माने में इस मोहब्बत ने कितने दिल तोड़े,
सभी क्यों पिया करते हैं, जहर ये फिर भी सभी क्यों पिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत पिया करते हैं। महबूब से हर गम मंसूब होता है, दिन रात उल्फत में तमाशा खूब होता है, रातों से भी लम्हे ये प्यार के किस्से आशिक सुनाते हैं, जफाए यार के किस्से बेमुरवत है, बेवफा है वो, उस सितमगर का अपने दिलबर का नाम ले लेके दुआएं दिया करते हैं, नाम ले लेके दुआएं दिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। थैंक यू। Thank you. So now, the songs composed by LP is very difficult to judge. Find which song is composed by Lakshmikant ji or which song is composed by Pyarelal ji. It still remains a secret. One must understand how LP used to compose their songs. Most of the music director pairs will compose the song separately or individually under their respective banner. Likewise, Shankar Jaikishan or Kalyanji Anandji. Interestingly, Lakshmikant ji was a follower of Jaikishan's style, not only in music, but also in Jaikishan's wearing of a wristwatch, cloth, etc. Whereas Pyarelal was a follower of Shankar's style of music. Both Lakshmikant and Pyarelal were complete musicians. Both of them knew the art of film song compositions as well as orchestra arrangements. Both of them were capable of extracting the best from the singers as well as from the musicians. Now, let's hear the song Main Shayar To Nahi from the movie Bobby, a musical romance starring Rishi Kapoor and Dimple Kapadia. The song will be presented by Krishna Kumar. Thanks, Apurva. मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको
आशिकी आ गई मैं शायर तो नहीं प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह मैं दुश्मन तो नहीं मैं दुश्मन तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको दोस्ती आ गई मैं शायर तो नहीं सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता जब से तुझसे मोहब्बत में करने लगा तब से जन से इबादत में करने लगा मैं काफिर तो नहीं मैं काफिर तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको बंदगी आ गई मैं शायर तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको शायरी आ गई मैं शायर तो नहीं Thank you. அக்ஷய் நீங்க இப்படி ஃபிட்டா இருக்கிறதோட ரகசியம் என்ன? ஃபிட்டா இருக்கிறதுக்கு தினமும் புரோட்டீன் அவசியம். ஆனா தினம் Now, the 70s saw a lot of hits from LP, from movies जीने की राह, दो रास्ते, बॉबी, दाग, रोटी कपड़ा और मकान, अमर अकबर एंथनी, to name a few. LP's number one position remained unaffected in the 70s, but this time Lakshmikant Pyarelal's competitors were R.D. Burman, Kalyanji Anandji, Ravindra Jain, Rajesh Roshan, Khayyam after 1976. With this, let's hear the song from the movie Intakam, Aa Jaane Ja,
LP made Lata Mangeshkar sing the first iconic and cabaret number, which is a rarity through her career. Presenting this song to you is myself, Apurva. जाने जा जाने जा मेरा ये हुस्न जवा 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 तेरे लिए है आस लगाए वो जालिम आ जाना जाने जा मेरा ये हुस्न जवा 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 तेरे लिए है आस लगाए वो जालिम आ जाना जाने जा आँख से मस्ती टपके है तो देखे ना दिल का सागर चलके है तो दिखे ना ला 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 क्यों तड़पाए तो क्यों तरसाए ओ जालिम आ जाना जाने जा मेरा ये हुस्न जवा 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 तेरे लिए है आस लगाए वो जालिम आ जाना जाने जा दूर से कितनी आई हूँ तो जाने ना प्यार का तोहफा लाई हूँ तो माने ना ला 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 ओ बेदर्दी से तो क्यों ठुकराए ओ जालिम आ जाना जाने जा मेरा ये हुस्न जवा 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 तेरे लिए है आस लगाए वो जालिम आ जाना
Thank you. Lakshmikant Pyarelal has composed over 2,900 songs according to the change of time and the situation demands for over 600 films, a record in a span of 35 years. It should be noted that Lakshmikant Pyarelal were consistent in delivering top hit songs. LP songs are available for all the Indian festivals, including Eid, Easter, and Christmas. LP songs are for all generations, and their songs are available for any situation. Here, let's hear the song Gaadi Bula Rahi Hai from the 1974 film Dost. The song was an immortal hit of the great duo. Presenting this to you is Prakash. गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, सर पे है बोझ सीने में आग, लब पे दुआ है जानो, फिर भी वो गा रही है, नगमे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, सोचे न बात दिन हो के रात, सिग्नल हुआ के निकली, देखो वो आ रही है, देखो वो जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा 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 रही है। Thank you. If any radio station
starts playing Lakshmikant Pyarelal songs 24 hours into 7 days, none of the songs will be repeated. Such an enormous quantity of popular songs with variety, quality, and melody as well. Unfortunately, there is no media support for Lakshmikant Pyarelal songs. Now, let's hear the song Ek Pyar Ka Nagma Hai from the movie Shore. The movie was written, produced, and directed by Manoj Kumar, who also happens to play the lead role in the film. The film was remade in Tamil as Ose. A small part of the song has the original voice of Mukesh. This will be rendered by Jayashree. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। La 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 कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया
In 1966, LP started cementing their place in the Hindi film music. LP's first musical hit film with big star cast, Aaye Din Bahar Ke, was released, followed by Pyar Kiye Ja. Truly speaking, 1967 belongs to Lakshmikant Pyarelal. They not only confirmed the number one position in Hindi film music, but also consolidated it with series of hits by one after another. Non-star cast film Farz was LP's first Golden Jubilee musical hit, followed by the big star-cast films like Anita, Shagird, yet another Golden Jubilee hit, Pattar Ke Sanam, Night in London, Jal, and another evergreen musical hit, Milan. Lakshmikant Pyarelal received their second Filmfare trophy for Milan without any stiff competition. Let's hear another wonderful number, Ajnabi Tum Jaane Pehchane, from the 1965 movie Hum Sab Ustad Hain, starring Kishore Kumar, Dara Singh, and Amita. This will be rendered by Krishna Kumar. अजनबी अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो ये बड़ी अजीब सी बात है कि नई नई मुलाकात है फिर भी जाने तुम अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो तुमने कभी प्यार किया था किसी राही से तुमने कभी प्यार किया था किसी राही से तुमने कभी वादा किया था किसी साथी से ना वो प्यार रहा ना वो बात रही फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो अजनबी भिन्न रहे और हमारा दिल तोड़ दिया भिन्न रहे और हमारा दिल तोड़ दिया साथ चले मोड़ के आके हमें छोड़ दिया तुम हो कहीं और हम कहीं फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो कि बड़ी अजीब सी बात है कि नई मुलाकात है फिर भी जाने तुम अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो Thank you.
These days, a lot of emphasis is laid on the chemistry of jodis by fly-by-night judges, proliferating on reality shows that are aired dime a dozen on all channels. They just need to watch Rajesh Khanna serenading Mumtaz in the film Do Raste to know what chemistry is all about. The 1969 film stars Rajesh Khanna and Mumtaz. It was a blockbuster hit at the box office. The song also had a revival track with newer music in the album along with two other songs. The song Ye Reshmi Zulfe presented to you by Prakash. ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी जाएगी जो ये आंखें शर्म से झुक जाएगी सारी बातें यहीं बस रुक जाएगी चुप रहना ये अफसाना कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी मगरूर कितनी हो जाएगी जुल्फे मगरूर इतनी हो जाएगी दिल को पढ़ पाएगी जी को तरसाएगी ये कर देंगे दीवाना कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी थैंक यू Jaane Man, a 1976 movie starring Hema Malini and Devanand. It was made in the silver jubilee year of the production company Navketan Films. As we all know,
Santa and Banta are two popular names for the stock characters in the Sardar jokes. The film had Hema Malini portray a duo role as Santo and Banto, similar to the characters. A Kishore Kumar song, Janiman Janiman. This will be rendered to you by Jayashree.
जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन Thank you. Now coming to the last song of this evening, from the movie Ek Duje Ke Liye. The movie was a debut film for the actors Kamal Hassan, Rati Agnihotri, Madhvi and Sunil Thapa, as well as the singer late S.P. Balasubramaniam sir. This film was received well by several Hindi film personalities after its premiere in Bombay. However, Raj Kapoor had expressed his reservations about the film's tragic climax to K. Balachander's assistant Suresh Krishna. A devastated Krishna had called K. Balachander late that night to convey Raj Kapoor's feedback to the director K. Balachander. He remained nonplussed and said that it was the climax that would make this film a hit. The film released the next day and its success validated Balachander's intuition. And when SPB first met Lakshmikant Pyarelal for this film, the music director duo had asked him to sing a song. The singer first sang the title song of Mere Mehboob, composed by Naushad. The composers then asked him to sing a simple song, and he sang Jaane Walo Zara Mud Ke Dekho Mujhe from the film Dosti, composed by the duo themselves. According to SPB, it was this song that convinced the composers of his abilities. The song Mere Jeevan Saathi will be presented to you by Prakash. मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। झूठा कहीं का झूठा कहीं का, हरे राम हरे कृष्णा, आवारा दिल ही तो है आशिक हूँ बहारों का, तेरे मेरे सपने मेरे घर के सामने आमने सामने, शादी के बाद हमारे तुम्हारे मुन्ना गुड्डी टिंकू मीली शिनशिनाटी बमलामो, खेल खेल में शोर शोर। भूल गए जॉनी मेरा नाम, छोरी मेरा काम, जॉनी मेरा नाम, छोरी मेरा काम, राम और श्याम वंडरफुल लड़की मिलन गीत गाता चल, बेशरम प्यार का मौसम बेशरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम।
ये रास्ते है प्यार के चलते चलते मेरे हम सफर दिल तेरा दीवाना दीवाना मस्ताना चलिया अनजाना आशिक बेगाना लोफर अनाड़ी बढ़ती का नाम दाढ़ी चलती का नाम गाड़ी बढ़ती का नाम दाढ़ी चलती का नाम गाड़ी जब प्यार किसी से होता है सनम जब प्यार किसी की आती है जाने मन बंधन कंगन चंदन झूला चंदन कंगन बंधन झूला कंगन झूला चंदन झूला 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 दिल दिया दर्द लिया जनक जनक पायल बाजे छम छमा छम गीत गाया पत्तनों ने सरगम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम वे जीवन साथी प्यार किए जा जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम la 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 la. This song was entirely formed by stringing various movie names. In 1998, after Lakshmikant's death, Pyarelal had done some work independently. Yet, Pyarelal always used the name Lakshmikant Pyarelal for all the future compositions. When the playback singer Kumar Shanu turned music director, he approached Pyarelal to arrange music for him. In the music of Farah Khan's Om Shanti Om Doom Tana. In 2009, Pyarelal won the Sachin Dev Burman International Award for Creative Sound and Music at the Pune Film Festival. So here was the musical journey of Lakshmikant Pyarelal. You were all an excellent audience and we enjoyed presenting the musical journey of LP to you. Hope to see you soon with another musical program. This is your moderator, Apurva, signing off. Thank you. Thanks so much, Jayashree, Apurva, Prakash, and KK. It was wonderful. Sorry, I joined about 5 minutes late. I had some issues connecting, but it was time well spent. Thanks so much. Hope to see you soon with some of my favorites, possibly RD and SD one day. We'll let you know. Yeah. I still prefer any day. I mean, we're getting the center ready for physical meetings. Hopefully, we'll have a physical meeting. We have a beautiful space which will hold up to 200 people. So maybe next time we'll do a physical one. Yeah. Thanks so much once again, Jayashree and Apurva. And yeah. great. Yeah. Thank you, everyone. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.